हेलो निधि, कैसी हो? हेलो। ऑल गुड। तुम बताओ। कुछ नहीं यार, फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। लॉन्ग डे एट वर्क। हाउ This वाज is the योर डे? third time in a row you have told me you are exhausted and you had a long day at work. Tell me something new. न्यू का तो पता नहीं, बट ये थर्ड टाइम इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई टाइम ही नहीं मिलता यार एक्सरसाइज का। द लाइफस्टाइल हैज बिकम सच कि दिन भर काम करते रहते हो, और द वर्क आवर्स गेट स्ट्रेच फ्रॉम एनीवेयर इन बिटवीन 10 to 14 hours a day. तो how can one basically find some time to improve their health in any way, Hmm. for that matter, be it exercise or good food? तो इसीलिए Hmm. सब एग्जॉशन वगैरह आ रहा है। This is true. This is true. And do you also feel like back pains, things like that? Knee, back, anywhere. I wouldn't even categorize that pain into back pain or knee pain. The entire body that keeps पेन होते रहता है। कुछ ना कुछ दर्द करते रहता है, बिकॉज सी पोस्चर्स बैड है ना। अगर मैं Hmm. काम करने बैठता हूँ, आई आई मैं अभी तो डेस्क जॉब है मेरा, राइट? तो जब मैं बैठा होता हूँ तो मेरी नेक एक सर्टेन पोजीशन में होती है बहुत टाइम के लिए, Hmm. मेरी आंखें होती है, मेरी Hmm. बैक होती है, मेरे Hmm. नीज, मेरे आर्म्स होते हैं ऐसे। तो एवरीथिंग काइंड ऑफ हर्ट्स समवेयर और द अदर ऑल द टाइम। Welcome to your 30s. Yeah, I think it's not just 30s, but yeah, वो भी हो सकता है। नहीं नहीं अच्छा. No, so basically what you have told and all your symptoms uh, are heading towards one phenomena. I'm sure you are not overweight, but this is a trend which is catching up with maximum people, which is overweight and obesity. मतलब disastrous consequences. And let's talk about that. And I'm sure I'll give you one example to say how unfit I have become. Recently, we've talked about it in another podcast, my trip to Rajasthan. And you will not believe it. People, foreigners mostly, twice my age, fitter, three times my style. अबे मतलब धड़ सीढ़ी चढ़ ले रहे हैं, रुक नहीं रहे, पाँव में चक्का लगा हुआ है, ऐसे 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 घूम रहे हैं. एंड लाइक दिस 60-70 ईयर ओल्ड पीपल, चाइना ताइवान पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सर में टोपी, ओवर साइज शर्ट पैंट, साइड में बैग, मस्त अपने चल चल के पूरा शहर चल चल के एक्सप्लोर कर ले. एंड आई एम लाइक ऑटो रुको प्लीज भैया ले चलो. And I felt so ashamed of myself. And I checked all the leading research from WHO, UNESCO, coming from India, major editorials. It's all saying it's a phenomenon which is happening, that is unfit, being unfit, leading to uh, overweight, ultimately leading to obesity. And did you know it's called the silent killer, and it's the next epidemic in India, globally also, but India. होगा ही ना निधि। इंडिया एक मेजर मार्केट है वेस्टर्न कंपनीज के लिए, Hmm. स्पेशली फूड कंपनीज के लिए। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, यंग Hmm. पॉपुलेशन बहुत है, Hmm. डिस्पोजेबल इनकम बहुत है लोगों के पास, और यहाँ पे कोई रेगुलेशंस भी नहीं है कि आप Yeah. खाने में क्या डालो, कितना Hmm. उसको डोपामिन हिट करने के लिए कितने भी केमिकल्स डाल दो। वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन, एफएसएसआई इज अ जोक इन इंडिया, राइट? वो कुछ इतना अपना जॉब इतना अच्छे से कर नहीं रहे जितना आई थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग मच बेटर जॉब देन देम। अभी देयर इज दिस फूड इन्फ्लुएंसर, राइट? एग्जैक्टली। देयर इज दिस फूड इन्फ्लुएंसर, कुछ उसका नाम है रेवंत हिम्मत सिंह, फूड फार्मर ही इज द अकाउंट नेम। तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, उसने इतना चेंज किया कि अभी बहुत सारी कंपनीज को फॉल्स मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह, वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट अल्टीमेटली समवेयर इज द सेम, द बॉटम लाइन इज द सेम, क्या कि किया इंडिया में जो भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाँ, तो उसने उसने जो कैंपेन्स चलाए ना सोशल मीडिया पे, कि ही इनेबल्ड पीपल टू स्टार्ट रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स फॉर अ वो? पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, राइट? उसमें कितनी सारी हार्मफुल चीजें डाली जा रही है, जैसे बोनविटा को ले लो।
उसमें वो क्लेम करते थे कि इसमें कैल्शियम है और आपको दूध में मिला के पियोगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। बट हाँ हाँ हाँ। बोनविटा इज नथिंग बट जस्ट शुगर। इट इज जस्ट शुगर। नो वंडर। एंड वो हम बच्चों को बचपन से दे रहे हैं, सोचो। तो ये हम्म फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? इट विल हम्म लीड टू ओबेसिटी। इट विल लीड टू बैड फूड एडिक्शन। उनको स्वीटनेस की आदत बचपन से पड़ गई है, राइट? तो ये नहीं, इवन हमारे टाइम पे इतना अवेयरनेस कहाँ था? इवन आई हैव हैड बूस्ट, माइलो, बोनविटा, जो भी आती थी कंपनीज, सब हम लोगों ने वही तो पिया है। बट सेम कंपनीज को आप अगर यूरोप में जाकर देखते हो तो वहां के फूड रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग है कि वहां पे ऐसे इतने सारी शुगर डाल के दे के नॉट गिव, ऑल्सो दे के नॉट फॉल्स एडवर्टाइज। तो ये सब चीजें तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, हमें कहीं ना कहीं वो हमें दिखाया जा रहा है कि दिस इज द फूड यू वांट ईट, शुड बी ईटिंग। दूसरा फैक्टर ये है कि ये फूड चीप होता है टू मेक एट स्केल। तो हर कोई टॉम डिक एंड हैरी इज ओपनिंग अ बर्गर शॉप नाउ, और हम्म बर्गर के साथ तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए जो हम्म। स्वीट होगा बहुत, राइट? चिप्स। तो वो कोल्ड ड्रिंक बैक एंड में कैसे बन रही है, यू डोंट हैव एनी आइडिया। वो क्या करते हैं, वो सब सिरप्स लेके आते हैं, ये शुगरी सिरप्स होते हैं फ्लेवर्ड, उसको थोड़ा सा डालेंगे, उस पे सोडा डाल देंगे, इट्स डन, जस्ट ऐड सम आइस। सो यू आर जस्ट ड्रिंकिंग शुगर इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो दिस इज गोइंग टू लीड टू ओबिसिटी, एंड द इजिएस्ट टारगेट फॉर दिस इज किड्स। हम्म और इसीलिए वो एपिडेमिक अभी नहीं तो अगले 10 साल में उस डेमोग्राफिक को बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाला है, क्योंकि बच्चे एड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बच्चों हम्म को बाहर खाने की आदत पड़ गई है अभी, क्योंकि आजकल तो क्या है, हर गली नुक्कड़ पे केएफसी, मैकडोनल्ड्स, कुछ ना कुछ खुल ही गया है। पेरेंट्स को आदत पड़ गई है, उनको टाइम नहीं होता तो जोमेटो हर वीक में। पहले हम लोग उतना जितना ज्यादा बाहर जाते नहीं थे, लेकिन अभी आज की डेट में people do not have time, or people are also getting addicted to using those fast food apps. जोमेटो कर लिया, 5 मिनट लगता है जोमेटो ऑपरेट करने में, आधे घंटे में घर आ जाता है खाना। उस खाने में क्या है क्या नहीं है, यू डोंट बॉदर। कार्ब हैवी फूड होता है, ऑयल्स होते हैं, बटर होता है उसमें, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। बटर पे रेगुलेशन नहीं है, वो तो अलग ही टॉपिक है। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस टू मच। व्हाई डोंट यू शेयर about some insightful statistics on this? Clearly, this is a topic which is much close to your Yeah, heart. it is. हाँ नहीं, but the concept is overweight and obese. What is the difference? I thought to myself. So I said, like, चलो देखते हैं. And then I now saw that in India, जब आपका BMI, body mass index, 23 से 25 के बीच में हुआ, so you are overweight. And beyond 25 and above, it's obese. Okay. And yeah, and currently across the world, 2.5 billion, मतलब 250 करोड़ लोग overweight हैं, out of a population of 800 crore. And 100 करोड़ लोग obese हैं. And I mean, it's scary. And हम देख रहे थे statistics in India, 1990, basically 1990 is also an important year because 1991 में liberalization, privatization, globalization happened. So when Indian market was open to the world market, when India basically became an open economy, 1990 में जो बच्चों में obesity rate था, और 2022 में जो है, it has increased fourfold times, 4 गुना बढ़ गया. So I mean, currently 30% Indians face cardiac arrest issues, hypertension, diabetes, liver disease, osteoarthritis, sleep apnea, ठीक से नींद ना होना, all related to obesity and overweight. Believe it or not, 25 करोड़ लोग को जनरल ओबेसिटी है, और 35 करोड़ लोग को इंडिया में एब्डोमिनल ओबेसिटी है, वो जो कमर के पास जो वेट जमा है ना, टायर्स, दैट इज Skinny बिकॉज, fat. या
That's because of हम्म abdominal obesity. हम्म। And India, you were right. I mean, like, I am amazed how you counted correctly that in India, by 2035, there are going to be 83 million overweight children. 83 million means बाप रे। how many crores? How many crores? 8 crore. 8.3 करोड़। Yeah. 8.5 crore overweight children. Now imagine the diseases they are going to face. Then I thought, okay, let's check. Acha, by the way, India is number one in the country, world, basically, um, with regard to child um, and adolescent overweight. I mean, across the world, conveniently. So I thought, let's see. And amazingly, you will see children under 5, उनका 127% increase हुआ है overweight statistics from 2005 से 2021 में. So, an adult male, there has been a 146% increase in obesity in the last 20 years. Adolescent girls में 125% and adolescent boy में 288%. So you see much more chubbier, overweight children. And this is across the demographic. Again, you began quite correctly. Children under 5, children from 5 to 9, 12, 9 to 15, or 18, 18 to 60, 80. Across the demographic, there has been nearly 100% average में बच्चा तो 100 to 150% increase हुआ है overweight and obesity. And total तो I've told you ना 3 करोड़ लोग इंडिया में अभी overweight है and it's just gonna increase. That is such a scary Yeah, statistic and yeah, scary prediction. yeah. um, Basically ये सब इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि हमारा जो इंडियन डाइट भी है, Hmm. मतलब हम लोग 100% इसको एक्सटर्नल कंपनीज पे ही नहीं डाल सकते. द प्रॉब्लम इज ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम आवर फूड हैबिट्स, जिसमें Hmm. हमें कार्ब हैवी फूड खाने की आदत है. मतलब Hmm. हमारे एक जनरेशन Hmm. के पहले अगर देख भी लो तो भी स्टिल इट वाज ओके बिकॉज उनका फिजिकल जो भी लेबर होता था वो हमसे काफी ज्यादा होता था. Hmm. तो वो अगर कार्ब हैवी खा भी लेते थे तो उतनी एनर्जी Hmm. यूज कर Digest. लेते थे. Hmm. 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 ऑल्सो उनके टाइम पे जो भी ग्रेन्स आते थे दे वर Hmm. कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द काइंड्स ऑफ Hmm. ग्रेन्स वी आर Hmm. ईटिंग. तो Hmm. देर Hmm. इज अ सीरियस लैक ऑफ अवेयरनेस. अभी तो काफी अवेयरनेस आ रहा है लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में, कि प्रोटीन या फिर आपने एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए. बट द चैलेंज देयर इज कि हम लोग चाइना नहीं है. Hmm. हमारे यहाँ पे इट वुड बी वेरी कंट्रोवर्शियल इवन टू जस्ट स्पीक कि हाउ ईटिंग अदर टाइप्स ऑफ मीट rather than chicken or mutton would be much cheaper, could be done on a mass scale. But again, that's a different problem. I Religion. don't want to go into it. But इंडिया में having protein rich food is a Hmm. problem, Yeah. and that leads to eating carb heavy meals, Hmm. fat heavy meals, fried Hmm. food, right? Hmm. आप प्रोटीन नहीं Hmm. खाते हो, आप हेल्दी फैट्स नहीं खाते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली क्रेविंग हो जाएगी कार्ब्स खाने की. Hmm. और Hmm. आप ज्यादा से ज्यादा जितना खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे आपका वजन बढ़ते रहेगा. Hmm. उसके बाद इंडिया में कल्चरल इशू ये भी है कि हमें एक्सरसाइज मतलब जिम वगैरह समझ नहीं आता. Hmm. और फिजिकल लेबर किसी को करना नहीं है. हम सब राजा बेटा या राजा बेटी है. हम वी Hmm. डोंट वांट टू गो टू एनी Hmm. सॉर्ट ऑफ वर्क विच रिक्वायर्स अस टू डू सम मैनुअल एफर्ट, राइट? Hmm. हमें घर में काम करने के लिए भी वी हैव हाउस हेल्प्स एंड एवरीथिंग. तो कैसे करोगे? मतलब आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, आपको कार्ब हेवी फूड की आदत है, आपको जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, वो जो फॉरेनर्स थे वो इतने इतने टाइम तक चल के जा रहे थे. Whereas Hmm. us, we need Uber immediately. हमें Hmm. चाहिए भाई कि कोई ऑटो आ जाए, कोई लेके चला जाए. हार्डली 5-6 किलोमीटर भी जाना होगा. ऐसे सोचने में 500 5-6 किलोमीटर जेन्युइनली उतने नहीं है, पर हमें Hmm. उतना भी चलना नहीं है.
फॉर वॉट एवर रीजन हम लोग टाइम साइट करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे नहीं यार रास्ते पे इतना ट्रैफिक होगा, रोड्स इतने गंदे हैं, हम लोग कैसे चल के जाए, n number of factors. So basically to solve this, what I can come up with or what I can think of is there has to be awareness amongst everybody कि हम्म हाउ अ बैलेंस्ड मील इज 100% नेसेसरी। जो स्कूल्स होती है, जो गवर्नमेंट हमसे इतना ज्यादा हाँ टैक्स ले रही है, तो हम्म गवर्नमेंट स्कूल ले लो या कोई नॉर्मल स्कूल ले लो, वहां पे बच्चों के मील्स में अंडे वगैरह चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर वेजिटेरियन बच्चे हैं तो उनको पनीर टोफू जैसी चीजें मिलनी चाहिए एट अ चीपर सब्सिडाइज्ड प्राइस, राइट। अगर कोई ओबिसिटी से गुजर रहा है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ डिसीज नाउ, फ्रॉम हम्म नाउ ऑन, एंड दे हम्म शुड गेट ऑल द सपोर्ट, ऑल द हेल्प दे नीड फ्रॉम लाइक हम्म स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स विच आर ऑल्सो अफोर्डेबल। मतलब हम्म हॉस्पिटल्स ने इसको एक नया बिजनेस नहीं बना लेना चाहिए कि अच्छा लोग मोटे हो रहे हैं, चलो नए नए टाइप के हमारे पास पेशेंट्स आएंगे कि इसको हाइपरटेंशन रहेगा, इसको बीपी रहेगा, इसको शुगर रहेगी। दैट शुड नॉट बी लाइक यू हैव इनफ पीपल इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, तुम उनको ट्रीट करने में भी लग जाओगे, यू विल मेक गुड मनी। पर हम्म हर चीज को मोनेटाइज करना है जो हमारे देश का है, दैट इज अनदर कल्चरल इशू। पर ये एक हो सकता है सोल्यूशन कि लोगों में अवेयरनेस लाना, एक्सरसाइज बच्चों को स्कूल में कंपलसरी कर देना, लाइक घर अ में लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एक्सरसाइज शुड ऑल्सो, हम पीटी क्लासेस आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव इन इनकलकेटिंग जिम हैबिट्स। अभी हम्म अगर बाहर जाके देखोगे तो लॉट ऑफ स्मॉल कंट्रीज एनफोर्स ज्वाइनिंग आर्मी। तो हम्म उसमें क्या होता है ना, उन बच्चों में एक डिसिप्लिन आ जाता है फिजिकल हेल्थ के बारे में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे इसमें हर बच्चे को आर्मी के लिए पुश करो या फोर्स करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए विच पुशेस देम टू डू रिगरस एक्सरसाइज एट अ यंग एज, कि उनको लगे कि हाँ मैं दौड़ लगा लेता हूँ, राउंड के 2 चक्कर तो मुझे लगाने ही है सुबह सुबह, मुझे पुशअप्स तो आने ही चाहिए, मुझे पुलअप्स तो आने ही चाहिए, स्मॉल थिंग्स, राइट, मेक अ बिग डिफरेंस। तो अगेन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट दीज आर माई 2 cents। एक्सरसाइज, गुड फूड हैबिट्स, रीजनेबल प्राइस पे प्रोटीन रिच फूड हम्म अवेलेबल होना शुड बी द सोल्यूशन फॉर दिस। और अगर कोई ओबिसिटी से ऑलरेडी गुजर रहा है तो हम्म दे शुड सीक हेल्प। What kind of help? Oh, that's a broad topic, but at a very basic thing, at a very basic scale, let's say I am obese, I should first of all understand कि this is going to impact my health in an adverse way. अब हर किसी का ओबिसिटी इज नॉट ऑलवेज लिंक्ड टू बैड फूड हैबिट्स, किसी किसी का हार्मोनल भी होता है। Genetics, तो right उसमें now. फैमिली, करेक्ट, उसमें फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये है ना, एक तो मेंटल होता है, फिजिकल होता है, राइट। तो मेंटली यू शुड सीक काउंसलिंग कि अगर किसी किसी को क्या होता है ना कि ज्यादा खाने की आदत इज काइंड ऑफ अ Okay. कंफर्ट। हम्म क्या होता है ना, किसी किसी को कुछ बुरा लग जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, वो खाने लगते हैं। जैसे कि हाँ तो उस केस में, या फिर एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स कुड भी, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया, बट उन्होंने एक मेंटल गाइडेंस सीख करना चाहिए। उसके लिए भी देर आर गवर्नमेंट के साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो इफ दे प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, कि किसी को इस काइंड ऑफ सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं नहीं, बट इफ देर आर, दे पीपल शुड सीक हेल्प लाइक दैट। हॉस्पिटल्स में तो हो जाता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज के लिए जिम जाओ, वहां पे ट्रेनर ले लो। ट्रेनर भी अफोर्डेबल हर कोई, हर किसी के लिए नहीं होता है, बट इनिशियल फेज में अगर आप, इफ यू कैन अफोर्ड, you should definitely seek guidance from a professional rather than trying to do it by yourself and trying to push yourself, क्योंकि वो हार्डली हफ्ता 1.5 हफ्ता आप करोगे खुद से, आपको पता भी नहीं होगा क्या करना है, आप शायद खुद को इंश्योर कर लो, आपको पता नहीं होगा क्या खाना है, आप शायद किसी सोशल मीडिया से कुछ पढ़ के देख के आ जाओगे, ट्राई करोगे, उसमें आपको इश्यू हो सकता है। सो बाय हेल्प व्हाट आई मीन इज सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, फिजिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, यू शुड टेक इट। और आजकल चैट जीपीटी भी काफी हद तक ठीक ठाक बता देता है, अगर आप अपने पैरामीटर्स सही से दे दो कि भाई हम्म मैं इंडियन हूँ, मेरे पास ये फूड ऑप्शंस है, मेरा ये एज हम्म है, मेरा ये हम्म वेट है, मुझे ये इश्यूज है, गाइड मी।
And then you can get it verified from a professional, and then you can continue on your Mm, journey. mm. And You're I right. can go on and on. I know. No, no, you are right. I mean, one thing which I keep hearing it from all my friends and people I know is they're developing something called fatty liver. And pretty much almost Mm, everyone I hear is, and it's like young people, like 12, 13-year-old, 20-year-old, 25-year-old, 40-year-old. And I was checking the research around it. कि कैसे हो रहा है fatty liver? Grade 1, grade 2. I mean, it's crazy stage 1, stage 2. And I checked, I mean, there's someone called Dr. Hemant Thakur. He's like, it is going to be very common now with overweight and obesity. Young children, they are going to have fatty liver and then उनका खाना बहुत restricted हो जाता है. So then I thought, let's check it. So another thing which keeps coming up is the use of mobile phones. I mean, mm, it is said that because so much dependence on screen time that we stop walking around. चल रहे तो फोन mm. में रहे. True. So physical activity बहुत कम हो गया है. And I was checking a BBC report. Um, and इसमें कह रहे थे कि I mean, the correspondent was someone जो बाहर इंडिया था, is moved overseas. He's doing a report on obesity in India, and he said he's asking now he's looking around and he was there in the 90s, early 2000s. वो बोलते हैं अब आके देख रहे थे दिल्ली में, अब घर में एसी है, kids hardly come out, and he's asking where are the children. मैं लाइक चिल्ड्रन मैंने क्या हम इतना गर्मी पड़ रहा है कौन बाहर जाएगा, सब फोन में हैं। सुबह से लेके रात तक दिन में फोन में लगे, हार्डली एनी फिजिकल एक्सरसाइज. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, हमारा सबका लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल विद बैड बैक. Mm. Then you Agreed. were right. Yeah, someone who's called Dr. Shashank Joshi is a very specialist endocrinologist, लीलावती हॉस्पिटल जो बैंगलोर में. उन्होंने भी यही कहा है कि एफ्लुएंस अमंग द पीपल, जब जो मंगा चाहिए आ जा रहा है, जब घर बैठे बैठे. And because they can afford to do so, we are doing it. No, I mean, someone who can't afford to do so will not blink it 50 times. So, or maybe 5 times a week. So the affluence coming to people, ये थोड़ा सा Mm, चलेंगे नहीं, they'll take a Uber bike. And there are alternatives now. No? If you can't take an Uber taxi, you can take an Uber auto, you can take an Uber ride. And because you can afford to spend, so the affluence is coming in the way. Then this urbanization, like, which is कहीं भी कुछ भी कैसे भी मिल जाए. Then this extremely high fat diet and low agreed. protein diet and digitally being addicted to the screens. These all are actually are the major reasons for obesity. We're saying obesity is the mother of all Mm, diseases. And you'll be amazed agreed. to hear nearly 200 medical conditions can be traced to obesity. 200. So if you are mindfully eating and exercising, you can avoid those who connected diseases you can avoid for yourself. Mm. Where are we heading? Nitin? Where are we heading? I mean, this is all मुझे brought लगता है upon ourselves. मतलब, this is not like God given. Those who are genetically predisposed to obesity, I'm not talking about them at all. But those of us who are inviting the disease to our own selves and not take those. I'll give you a statistic, one more. So, nearly every research says that the use of ultra processed food is a sure shot way of getting obesity. तो हम सोचे Mm, कि चलो हम देखते हैं क्या है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, बिकॉज ऑनेस्टली आई नेवर फोकस मच अबाउट ऑल दिस. हाँ, मतलब आई नो द रिसर्च, आई नो द थिंग्स, बट हम इतना कभी सोचते नहीं. आई शुड लाइक द फूड फार्मर यू वर टॉकिंग अबाउट. दिस इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, अपना देसी सर्वे, बेस्ट इन इंडिया 2024-25. It says the market for ultra processed food in India has increased from $900 million in 2006 to $37 billion in 2019. There is a 33% annual growth in the market of ultra processed food. $37 billion, बाप रे. I can't even think in rupees. 2-3-4 लाख करोड़ से तो नीचे तो होगा नहीं प्रोसेस फूड.
But let's see what is ultra processed food because I honestly didn't know. So I Mm, checked the best websites in the world, medical websites, and I am guilty of eating everything: soda, ice cream, chicken nuggets, cereals. वो जो कॉर्नफ्लेक्स आता है ना, almond, blah blah blah. You should not touch them. mm, Candy, potato chips, uh, fried chicken, frozen coffee drinks, granola bars. I never knew they were ultra processed. Cookies, cheese mm, crackers, packaged sliced bread, which is why they say have either homemade bread or freshly baked bread from the bakery and not the sliced bread. Ketchup, salad dressings, candy, mm. and definitely do not purchase sliced cheese. Never purchase sliced cheese. Can I at least buy block of cheese? Use, that's it. But do not buy cheese like. And the worst thing I saw is उसमें लिखा है never buy any food product जिसमें best before दिया रहता है. Best before. हाँ, अगर best before दिया है तो never purchase. Best before 26th May 2025. Best before 1 week of manufacturing. वो तो कभी मत करो. Like if you Mm. eliminate these things from your diet, uh, you're sure only going to be successful and healthy. So ऐसा तो खाए क्या? Fruits 100%. Fruits are good. Just उसको पानी में कुछ देर रख लो. Get rid of the wax and everything they put to make it Mm. injection ना मारे. Vegetables and fruits. Milk, pulses. Milk preferably from Goala. तो अगर नहीं Mm. है तो पानी. Pulses, egg, nuts and seeds. Cheese is very important for our health, which is why cheese moderation में खाना and slice करके मत खाना, grate करके खाना, shred करके खाना. Get that. Mm. But Okay. but eliminate every other thing. Eliminate eating outside. Eliminate fast food. Basically, eat at home. Eat uh, these things. Organic. मतलब not Organic, so 100% organic. yeah, It yeah. is a wrong term. I know, I No, no, know. you can eat. No, Uh, no, you can eat organic if you can afford to find it at an affordable cost. exactly. It sounds like it distracts the entire theme of our कि हमें क्या खाना चाहिए. तो अगर ऑर्गेनिक बोल देते तो you try to look at organic labeling, which is not the Yeah, case that I was trying to make. It was more like घर का खाओ, पैकेज ना हो, जो किसी नहीं, पैकेट से ना निकले, नहीं, आप घर nothing. पे Yeah, बना रहे हो, खुद से बना रहे हो. yeah, ऑल्दो yeah. उसमें भी आपका कंट्रोल 100% तो नहीं रहेगा बहुत सारी चीजों पे, फिर भी, पर एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि ये तला हुआ नहीं है, ये किसी yeah, नहीं, गंदे से तेल में बना हुआ नहीं है, नहीं, आ, किसी फैक्ट्री में कुछ किसी ने इस पे चल के नहीं गया इस पे, और नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल नहीं है. नहीं, Is नहीं. something that you should be very careful about when you are eating your food. Absolutely avoid eating anything that comes out of a plastic. Hmm? Anything that comes into a plastic Correct, correct, packaging, correct. do not eat it. Neither those health juices. When I was younger, I always wanted to have this real and Tropicana ka juice. Yeah, and I would think, oh wow. And those were not within our reach. Advertises were Nobody so bought those. good, so good. Yeah, Yeah, and nobody bought those. Like for real, those were very expensive to us back then. So today I think any one of us can afford it, but back then, no. And it came out as such healthy drinks you can have every morning. But all false. There's use of sugar in now I'm seeing and hearing. It's better to it's get not your even own. real fruit juice. Yeah, you can. It is it is, and the worst part is ये सिर्फ इंडिया में ये सब करते हैं, ये यूरोप बाहर में में ये सब होता है नहीं करते. नहीं. नहीं होता. A friend of mine in my previous company told me कि जो यहाँ पे ट्रॉपिकाना मिलता है और जो यूके में ट्रॉपिकाना मिलता है, लिटरली कलर का डिफरेंस दिखेगा. यहाँ पे ऐसा लगेगा वो जूस एकदम डार्क ऑरेंज,
एंड सो स्वीट। वहां पे यू कैन टेल इट्स एटलीस्ट अ लिटिल नेचुरल। Hmm. It's very wrong. Why our government allows this kind of things here? I mean, उनका government बोल तो structure रहा हूँ, बहुत वैसे एफएसएसएआई इज अ जोक। वो तब काम करते हैं जब कोई मास प्रोटेस्ट होता है किसी चीज के अगेंस्ट, जैसे मैगी के अगेंस्ट हो गया था, या बिल्कुल फिर बराबर। किसी चीज के अगेंस्ट हो गया, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं तुम ऐसे फॉल्स एडवर्टाइज नहीं कर। तब तक उनको, वो खुद नहीं काम करते, वो चाहते हैं जनता उनका काम उनके लिए करे, बट छोड़ो। तो मैगी तो bullshit. I mean, they told Maggie has नेस्ले, iron and calcium. नेस्ले इज अ गार्बेज कंपनी। उसके बारे में तो But I love Kit Kat. ऐसा मत बोलो. I had one yesterday. नेस्ले इज लाइक, वो वॉर क्राइम से कम क्राइम्स नहीं किए They हैं feed नेस्ले our वालों ने children लोगों के साथ। Maggie. Little kids, like 2 year olds, 3 year olds, they are brought up on Maggie. आई नो। पहाड़ों पे कॉलेज मैगी किड्स, से कैसे नहीं? या ट्रू। I came from my holiday at night. Like I came back by 10:50. My mother and me had garam garam Maggi for dinner. No wonder I'm also becoming super fan. But yes, so what do we do? Chalo, come up with solutions. What do we do? Sum it up. या एज ए सोल्यूशन, एज आई ऑलरेडी सेड, ये What आप do we ऐसे have for breakfast bowl? Idli. ब्रेकफास्ट में अंडे खाओ। Hey, I'm a आप अगर अंडे vegetarian. नहीं खाते हो तो फर्मेंटेड फूड खाओ, जैसे इडली हो गई। Yeah, I love या और थोड़ा प्रोटीन अगर ऐड कर सकते हो तो प्रोटीन ऐड करो, पॉसिबली। yes. वेजिटेरियंस के लिए तो मोस्टली हमें दही, दूध, ये सब हमें ट्राई करना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। अगर आपको डेयरी फूड से प्रॉब्लम है तो आप टोफू खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। ईट Yeah. एनीथिंग दैट विल फिल यू अप एंड ऑल्सो गिव यू एनर्जी। फ्रूट्स खाओ, Hmm. नट्स खाओ। सुबह Hmm. ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, राइट? Hmm. और आपको कोई फैंसी चीजें खाने की जरूरत नहीं है, ब्लूबेरीज और ग्रीक योगर्ट खाने की जरूरत नहीं है। घर पे जो इंडिया में मिलता है, जामुन्स आर अ ग्रेट सोर्स। जैसे ब्लूबेरीज होती है ना एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई, वैसे जामुन भी होता है, और वो बहुत सस्ता होता है। Yeah. वो डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा होता है, वो खा लो। Hmm. वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू लोकली, एज अ फ्रूट, एज अ नट, और फिल्स यू अप, जो आपके दादा परदादा लोग खाते थे, मतलब हर चीज नहीं, बट मोस्ट ऑफ इट, तो वो खाओ। जवार खाओ। दोपहर दोपहर में व्हीट रोटी मत खाओ, जवार की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, बेस्ड ऑन द सीजन। क्योंकि मिलेट्स का भी वही काम होता है, दे फिल यू Yeah. अप प्रिटी क्विकली एंड Hmm. दे लास्ट लॉन्गर। Hmm. अगर आपको खाना है तो पीनट बटर ले लो। आपको अगर इतनी ही बाहर की चीजों की तलब लगती है तो पीनट बटर इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। फिर बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए। Hmm. आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट्स की जरूरत नहीं है। इतनी सब्जियां खाओ, तुम्हारी प्लेट आधी भरी हुई होनी चाहिए किसी भी सब्जी से। थोड़ा बहुत पोर्शन होना चाहिए प्रोटीन का, जैसे कर्ड ले लिया, अंडे ले लिया। अगर आप मीट खाते हो तो चिकन ले लिया, फिश ले ली, वो सब आप खा सकते हो। राइस या रोटी का बहुत छोटा पोर्शन होना चाहिए आपके इसमें। बहुत सारे फाइबर्स होने चाहिए, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। Hmm. सोल्यूबल फाइबर्स अगर बोल लो, भिंडी खा लो, चिया सीड्स खा Hmm. लो। ये सब आप पानी में मिला के, बहुत सस्ती होती है चिया सीड्स, Hmm. 50 रुपए का Yeah. पैकेट आता है। Yeah, I 100 रुपए have. का आता होगा ज्यादा से ज्यादा। एग्जैक्टली exactly. उसको भिगो दो, उसको दही में भिगो सकते हो आप। Hmm. और उसके बाद आप आपको कुछ Do खाना you है तो have chia seeds? क्यूकम्बर खा लो। आई हैव इट, आई ऑल्सो हैव इट एट टाइम्स। आई वॉन्ट टू बी मोर रेगुलर एट इट, बट या आप क्यूकम्बर खाना चाहिए, गुआवा खाना चाहिए, ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर्स। Iron, ऑल iron. चीप। एग्जैक्टली, ऑल। आई वुडेंट से चीप, बट इट्स नॉट सुपर एक्सपेंसिव इधर। No, आप no. बाहर Guava जाके एक is बार खा affordable. लोगे, हाँ हाँ उतने में हाँ. आपकी हफ्ते भर की ग्रोसरी भर जाती है घर पे। शाम के खाने में सिर्फ दाल चावल मत खाओ, कुछ ऐसा फिर? खाओ जिससे आपका पेट भरे। और अंडे आर सो चीप एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ, इट्स अ सुपर फूड। ये सबने हम्म. खाना चाहिए। आई वुड से अंडे नॉनवेज होते भी नहीं है, मतलब माना वो पेट पे नहीं उगते, लेकिन आप किसी को मार नहीं रहे हो अंडे खाने में। दे लाइक इनफर्टाइल ही होती है वो, जो एग्स दे रही होती है, तो उसमें कोई बच्चा नहीं होता, आप खा सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग। Everybody should have eggs. I've asked so many people to start eating eggs, but I don't know. A lot of people are Have they? Have very they? concerned. Anything?
Hmm? Have they taken your advice and started eating? Some do. My sister did for a couple of Oh, days, then she stopped again. Yeah, it's something that you build a habit on. फूड हैबिट्स ही बोलते हैं, हैबिट होती है वो. यू hmm. कैनॉट जस्ट आज खा लिया फिर कल से फिर जो खा रहे थे वही, क्योंकि आदत है ना, तो आदत डालने में टाइम लगता है. एक्सरसाइज का बताओ जल्दी. What can we do to? एक्सरसाइज हर किसी ने एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर आप यंग हो, फिट हो, और नहीं भी हो, तो भी वेट लिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स वो होते हैं जो आपके बोन्स को प्रोटेक्ट करने वाले मसल्स होते हैं. उन मसल्स के लिए आपको हेवी लिफ्टिंग की जरूरत होती है. और अगर आप एक लड़की और आपको लगता है कि आपके बहुत मसल्स बन जाएंगे एक्सरसाइज करने से, वेट लिफ्टिंग करने से, वैसा लड़कियों में होता नहीं है. उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो उनकी मसल बिल्ड उस फॉर्म में नहीं होता है जैसे एक मेल के बॉडी में होता है. फॉर देम इट इज मोर अबाउट मसल रिटेंशन एंड strengthening the existing muscles than building some bodybuilders type body That that was does my not happen. fear. My fear then. Many women fear the same exact thing. They are worried कि वो आदमी जैसे दिखने लगेगी. That does not happen. You were telling आदमी भी इतने जल्दी नहीं बनते कि 4 दिन जिम जाकर थोड़ी कोई बन सकता. एग्जैक्टली exactly. लोग सालों आदमी सालों साल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती. और तुम बीइंग वुमन यू फील कि अरे मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ तो मेरी तो मर्दों जैसी बॉडी. मर्दों की नहीं बन रही है बॉडी. सो या. That's correct. You're right. No, I think the least we can do is we can start walking, jogging, walking, free hand exercises, and then we can always take some break. Okay, okay, great. यस. यस, Yeah, वॉकिंग, गुड गुड पॉइंट. हर मील के बाद 20 minutes वॉक. Everybody can do it. yeah. Regardless of how busy you are, make it a point कि आप दिन में 2 बार लंच और डिनर के बाद 20 मिनट वॉक करने जा रहे हो. Yeah. सब Okay. कुछ रुक सकता है. आपकी हेल्थ एक बार गई, इट्स नॉट गोना कम बैक. Yeah, that's what I was thinking. Once you're overweight or obese, then it's irreversible always. इट्स वेरी Okay. डिफिकल्ट टू कम बैक. Mm. Okay. Cheers to all of that. Um, Hopefully, मेरा जो कल मैगी खाने का breakfast plan था वो you have nicely demolished. I'm not going to have that anymore. I'll go line up to my idli wala. भैया इडली खिला दो. And maybe juice पिला दो after some time. So, मौसमी का. एक बड़ा ग्लास. ऑल्सो अगर आप जूस पी रहे हो तो आई वुड सजेस्ट ईट अ फ्रूट इंस्टेड. इट्स Right. चीपर, इट्स बेटर. बिकॉज फ्रूट आपकी बॉडी बनी नहीं है 1 मिनट में एक पूरा फ्रूट खा के प्रोसेस करने के लिए, वो भी विदाउट फाइबर. Mm. वही अगर आप फ्रूट खाने बैठते हो तो आप वो 1 मिनट में खा नहीं सकते हो. यू टेक इट स्लोली. Small धीरे bites. धीरे Yeah. जाके आपके सिस्टम में जाता है, फाइबर्स के साथ जाता है, तो एकदम से शुगर भी नहीं जाती बॉडी में. तो वो Right. फैटी लिवर वगैरह जो तुम बोल रही थी, दैट ऑल्सो कुड बी वेरी वेल बी अवॉइडेड. Okay, so okay, fine. Now I'm not going to have juice also. I'm just going to go and have halwala के पास चले हैव अ जाएंगे. प्रॉपर फ्रूट. वो कट करके दे देते हैं आपको, बस एक छोटी सी वो टूथपिक डाल के ही खाना होता है उसको. Great, दैट्स great. डुएबल. अगर वो Okay, आपको महंगा लग रहा है तो आप घर से काट लो फ्रूट्स. चीप होते हैं fine. फ्रूट्स, इतने महंगे नहीं होते. You are right. All right. Thank you so much. We are done today. Yes, it was Hopefully, such a nice discussion today. I'm so happy we finally yeah. covered this.